So hello, let's continue with our second question of our final accounts 12th standard Maharashtra State Board. So the question number 2 is Sanjay and Sudhir are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. So just mark this ratio. It's very important. So 3:2 को mark कर देंगे. Trial balance of the firm on 31st March 2010 was as follows. So they have given trial balance and adjustment. So let's see what is there in trial balance. Okay, the first thing is trial balance as on 31st March 2010. So we have this side as debit side. We'll just write it. This side of a trial balance is debit side, and this side of a trial balance is credit side. Okay, so the things which are there in debit side goes in trading account, debit side, profit and loss account, debit side, and in asset side of balance sheet. Now, the things which are written in credit side, it comes in trading account, credit side, P&L account, credit side, and liabilities side of balance sheet. Okay, so this thing are the basic. So we already knew about this thing. So we are going to start with scrutiny. We are going to just see which of the following comes in which account or which statement. So let's begin with that. So here in debit side, we have first thing that is opening stock, which will be in trading account debit side. Now purchases also in trading account debit side. So I'm just going to highlight it with yellow, which are in trading account debit side. Okay, so purchases is also there in trading account debit side. Now we have debtors, which comes in assets. So I'm going to mark it with green so that we can differentiate what will come in balance sheet, what will come in trading account, what will come in partners capital account, and what will come in profit and loss account. So I'm just highlighting in different colors so that it is easy for you to understand how it is adjusted or how it is shown in other types of account and statements. So again, now wages will come in trading account debit side. Salaries of employees comes in profit and loss account debit side. Land and building comes in asset side. So we have here land and building asset side. Machinery also comes in asset side. Oh, wait, the color. Asset side. Machinery in asset side. Furniture also comes in balance sheet asset side. Advertisement for 2 years. So this is an hidden adjustment which will be explained by me after I go with this. So ये एक hidden adjustment है. जब हम adjustment में पहुंचेंगे तब मैं आपको explain करूंगी. Since this is a hidden adjustment, it has two effects. So first effect, or else we can say the first effect will be in profit and loss account debit side. So yeah, PD, and the second is in balance sheet asset side. So this will be denoted as prepaid advertisement. Bills receivable asset side, they are assets, so asset side of balance sheet. Then insurance, again profit and loss account debit side. Drawings, so drawings are there in the question, this trial balance. It can be written in balance sheet liability side, which will be deducted from their capital because they have just taken money from their business. So but now, as I told you, we are going to make partners capital account in every question. So we are going to create this two partners capital account. So this will come in that partners capital account since it is easy for us to understand. So I'll write it partners capital account debit side. Cash in hand, okay, this is an asset. So asset side. Rent will be profit and loss account debit side. Power and fuel related to factory, so it is in trading account debit side. I hope everyone is understanding this. Now coming to this section, that is credit side section. So everything which is in credit side goes in the credit side of partners capital account, trading account, profit and loss account, and in liability side of balance sheet. We know it, I have told you. Now let's mark. So we same following the same thing, same color pattern here. Okay, so first thing is we have capital. So this is the opening capital of partners capital account since they have already invested some capital in that business. So this will come in their capital account. Okay. If you're not making capital account like partners capital account, you have to write it in liability side of balance sheet. But we are making partners capital account, so it comes in partners capital account credit side. Then we have sales, which comes in trading account credit side. Sundry, creditors, balance sheet liability side. Bills payable, balance sheet liabilities side. Discount will come in profit and loss account credit side. So
Yeah. So just remember this marking scheme. You should just write like PCP, PC, PD, TC, TD, and all. L for asset, sorry, L for liabilities, and A for asset. It's okay. Then we have last outstanding rent. So outstanding expenses comes in liability. So we are going to write liability. This is not an adjustment. We don't have to add it in PD with rent. It is just a single entry of outstanding rent and liability side. This is not an adjustment. Now let's move on to the adjustment. Before moving on, I'll explain you what is going to happen of this advertisement 2 years. So first thing is that we are just going to solve it like this. Since we know that this is 1 year, this balance sheet is for a particular year, it's not for 2 years, it's just for 1 year. So advertising, but they have given for 2 years, so they told that for 2 years they paid 6,000, that is 6k. 6k they paid for 2 years, but we just need for 1 year. If 2 years is 6k, 1 year kitna hoga, 1 year ka kitna? Okay, so we are just going to cross multiply it. So here 6k into 1 divided by 2, यहाँ पे 2 कट गया, यहाँ पे 3 आ गया. So for 1 year the price या फिर cost of advertisement is 3,000, that is 3k, but they have given 2 years का पेमेंट उन्होंने दे दिया. इसका एग्जाम्पल अभी है कि मैंने एक चीज, चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका इजी बनाने के लिए. मैं एक घर में रहती हूँ जिसका 1 महीने का रेंट है 100 रुपीज़. अभी मैंने सोचा कि एक एक महीने में क्या क्या करूंगी. मैंने 2 महीने का डायरेक्ट दे दिया उनको, पर मुझे एक ही महीने का देना था ना, तो 1 महीने का मैंने एडवांस में दे दिया. तो दिस इज ऑल्सो सेम कि एडवर्टाइजमेंट का भी हमने 1 साल का एडवांस में दे दिया. सो ये उसकी एक्चुअल प्राइस है. सो ये हमारा होगा प्रीपेड, हमने ऑलरेडी पे कर दिया है. तो इसका फर्स्ट इफेक्ट जो होगा वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, जहां पे हम एडवर्टाइजमेंट्स में से माइनस करेंगे प्रीपेड, जो कि होगा 6,000 में से प्रीपेड की वैल्यू दैट इज 3,000 हम माइनस करेंगे. और एसेट साइड में उसका होगा एडवर्टाइजमेंट की, एसेट में हम डायरेक्टली लिखेंगे प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट और डायरेक्टली 3,000 हम लिख देंगे. So I hope this is clear, and this will be showing in working note. We'll show this in working note. Okay, now moving on for the adjustment. So here are the adjustment of this question. So first adjustment, of course, we have the stock in hand, that is our closing stock, which is given as 35,000. So obviously we know that all adjustment have two entries. So its first entry is an asset, and its other entry will be in trading account credit side. Okay, so this is an important adjustment. Second adjustment is very important. Write off rupees 2,000 for further bad debts and maintain RDD at 5%. So I told you it's very important, and it has a bunch also. So bunch के बारे में मैंने बोला था आपको मेरे adjustment वाली वीडियो में कि 2 इफेक्ट्स है इसके. So इसका फर्स्ट इफेक्ट हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, and the second effect will be in asset side of balance sheet, where will be all these things will be deducted from debtors. Okay, so we are just going to deduct this from debtors. So what we are going to do, this is the amount, this 2,000 they have given us bad debts. Now first we are going to deduct 2,000 from debtors. Debtors का जो amount है उसमें से 2,000 हम माइनस करेंगे. फिर जो आंसर आएगा उसमें हम RDD निकालेंगे 5%, और फिर जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो हम आउटर कॉलम ऑफ बैलेंस शीट में लिखेंगे. तो यहाँ पे डेटर्स को हम मार्क कर देते हैं क्योंकि उसके सामने हमने नंबर 2 लिख दिया है, बिकॉज एडजस्टमेंट नंबर 2 इज रिलेटेड विद डेटर्स. दिस इज हाउ वी डू स्क्रूटनिंग. एंड फर्स्ट मेथड इज, माई मेथड इज टू सॉल्व एडजस्टमेंट फर्स्ट, देन वी जस्ट हैव टू कॉपी आउट दिस थिंग्स, ओपनिंग स्टॉक एंड ऑल. सो let's move on to the third adjustment. Third adjustment is depreciation on land and building. Depreciation, we know that means the amount is getting value है assets की वो कम हो रही है. So इसका first effect we know land and building and machinery are assets, so it will be in balance sheet asset side अभी. और next effect will be in profit and loss account debit side as depreciation on land and building and machinery. In asset side we are going to just mark here कि यहाँ पे हमारा नंबर 3 वाला एडजस्टमेंट रिलेटेड है, तो जो भी डेप्रिसिएशन का परसेंटेज है वो हम इन अमाउंट्स पे निकालेंगे, एंड फाइनल हम लोग लिखेंगे आउटर कॉलम में. फोर्थ वाला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो वेजेस के ऊपर है, सैलरीज के ऊपर है. तो सैलरीज में और वेजेस में हम ऐड करेंगे जो कि टीडी यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, और पीडी यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, और जो लाइबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस और आउटस्टैंडिंग सैलरीज के ये अमाउंट जो दिया गया है. तो अभी हम मार्क कर देंगे वेजेस को, जिसमें रिलेटेड एडजस्टमेंट 4 है, और एडजस्टमेंट फॉर सैलरीज इज ऑल्सो नंबर 4. नाउ फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट है, उसमें हमने बोला है क्रेडिट परचेस अमाउंटेड 4,000 बट नॉट रिकॉर्डेड. हमने खरीदा तो एक चीज, पर हमने उसको ऐड ही नहीं किया. तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया तो उसका 2 इफेक्ट हो गए. तो उसका फर्स्ट इफेक्ट यहाँ पे होगा कि हम परचेसेस में ऐड करेंगे. तो परचेसेस कहाँ है, ट्रेडिंग अकाउंट में है, तो हम लोग परचेसेस के सामने 5th नंबर डाल देंगे बिकॉज इट इज रिलेटेड विद 5th एडजस्टमेंट. और
क्या होगा, परचेसेस में ऐड होगा। किस नाम से, अनरिकॉर्डेड परचेस, क्योंकि हमने उसे रिकॉर्ड ही नहीं किया है। फिर यहाँ पे हमें क्रेडिटर्स में भी ऐड करना होगा, क्योंकि दो इफेक्ट्स है, क्योंकि हमने क्रेडिटर्स में ऐड किया क्योंकि ये क्रेडिट परचेस है, तो ऑब्वियसली बात है कि उसका एक इफेक्ट तो हमारा जाएगा बैलेंस शीट में, तो वो हम ऐड करेंगे क्रेडिटर्स में। सो क्रेडिटर्स के सामने भी हमने लिख दिया कि उससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है, जो कि नंबर 5 है। नाउ अभी प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे इंटरेस्ट है, सो हमें फिर से इसके दो इफेक्ट्स होंगे, क्योंकि सबसे पहला इफेक्ट होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे कि हमें पता है कि इसकी 2 एंट्रीज होती है, एक बैलेंस शीट में जाती है और जो बची हुई एंट्री है वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है या फिर P&L अकाउंट में जाती है। But in this, we are not going to put its entry in balance sheet because we are just going to make partners capital account. That's why we are just going to add पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही ये ऐड होगा, जहाँ पे हम लोग उनका फाइनल कैपिटल लिखते हैं, क्योंकि दे are getting interest, provide interest on partners capital account. So we are just going to add it in partners capital account credit side, जहाँ पे हमने कैपिटल लिखा है partners capital का, और वहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे। और नेक्स्ट एंट्री इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय पार्टनर्स करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड आएगी। I've also placed this screenshot over here, this side, so that it's easy for us to get view, so that we don't have to go there and find what are the adjustment, what are the things which are there in the trial balance. So okay, so last you are not able to be okay. From the above trial balance and adjustment, prepare trading account, profit and loss account for the year ended 31st March 2010, and balance sheet as on that date. Okay, so we have given trading account for the year ended 31st March 2010, which we have made in the books of Sanjay and Sudhir. So this is an important statement to be written, because if you don't write, you will not get extra marks for writing this, but if you will not write, your half marks will be deducted. So this is very important. So trading account, obviously you should mark the debit side and credit side, which is debit side, which is credit side. Here we have profit and loss account for the year ended 31st March 2010. Here we have partners capital account, because I said we make partners capital account, so this is an extra. Here I have again balance sheet, which is as on 31st March 2010. Now let's begin with the question. First, I said we have stock on hand, that is closing stock. So I'm just going to leave 2-3 lines, because we know closing stock should come in end, right? So I'm just going to write it, leaving 2-3 lines from entering account credit side. So we are going to just write by CLOING closing stock. And what is the amount of this closing stock? This 35,000. Okay. So now the second effect is an asset side. So I'm just going to write it here. Again, we don't write buy or to in balance sheet, so I'm just going to write closing stock. Okay, closing stock amount is 35,000. Done. Second is write off 2,000 further bad debts maintained on RDD. Okay, so सबसे पहला चीज जो हमने किया है वो है नेक्स्ट एडजस्टमेंट 2, जो कि है डेटर्स के ऊपर। डेटर्स का हमने मार्क किया था, यस डेटर्स इज 12,000। सो हम लोग फटाफट लिखते हैं डेटर्स, उसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। उसमें हम माइनस करेंगे व्हाट, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स हम माइनस करेंगे। क्या अमाउंट है बैड डेब्ट्स का? 2,000 अमाउंट है। 12,000 में से 2,000 गए, बचे हमारे पास 10,000। अभी इस अमाउंट के ऊपर हम फिर से 5% ऑफ RDD माइनस करेंगे। सो हम यहाँ पे लिखेंगे RDD एट द रेट ऑफ 5%। ओके, सो RDD 5% है, तो 10,000 का 5% विल बी, वी आर जस्ट गोइंग टू डू इज इक्वल टू दिस अमाउंट का इंटू 5%, सो 500 रुपीज। सो उनका सेकेंड एंट्री क्या होगा? Second entry will be in profit and loss account. So we are just going to leave this accounts, this two lines empty, because we have to transfer gross profit or gross loss, whatever it comes. So we are just going to write two bad debts. And what is the amount of bad debts? 2,000. We're just going to write in outer column. Then we just can write 2 RDD. Amount of RDD is 500. Yes. Now we are just going to reduce this. So is equal to 10,000 minus 5,000, that is 9,500 in outer column. Next thing, let's move further on depreciation, land and billing. So what is the value of land and billing? Land and billing 13,000, so just write land and billing amount is 30,000. Don't forget to write commas, because you might get confused in exam while doing it very fast. So we are just going to depreciation at the rate, what is the rate of depreciation? 5% on land and building. So 5% on land and building. So what is equal to this ka into 5%. Okay, it's 1,500, and we will just write it here.
subtracting the amount. So this minus this. Here, to depreciation, T capital of 2, okay, to depreciation on land building. I'm just going to depreciation on land and building. Oh, should be less. I'm just going to write it LNB. You can understand this land and building. What is the amount of depreciation? It's 1,500. Next, in the same adjustment, we have machinery. Okay, CHINERY, machinery के ऊपर भी depreciation है. कितना percent depreciation है? 10% depreciation है. 10% depreciation है ना? Okay. So machinery की value कितनी है? Plant and machinery is 25,000. So 25,000 का 10% is 2,500. So again, just write the final answer in outer column. This minus this. We just got it here. Just going to copy here. I'm just going to write machinery. What is the amount? 2,500. 2,500. Return. Next adjustment, outstanding wages and outstanding salary. Just write leaving first line. So to wages. wages यहाँ पे हम bracket में लिखेंगे plus OS, that is outstanding wages. So what is the value of wages? 5,000 and outstanding wages की value है 2,000. ओके, आउटर कॉलम में दोनों को ऐड करेंगे. यहाँ पे हम इसका लिखेंगे लाइबिलिटीज में थोड़ा नीचे लिख देंगे. यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सबसे पहले वेजेस और उसका इनर कॉलम में हम लिखेंगे 2,000. यहाँ पे सैलरीज का कितना है 1,000. ओके, यहाँ पे भी हम लिखेंगे सैलरीज, इसका अमाउंट है 10,000. उसमें हम और ऐड करेंगे OS एक्सपेंसेस ऑफ 1,000 और टोटल आउटर कॉलम में लिख दिया जाएगा. और यहाँ पे हम इन दोनों की टोटल लिख देंगे. Okay, so this is done. Now next adjustment is credit purchase amount rupees 4,000 were not recorded in books of accounts. So let's go back to the trading account. To purchases. Again I said P should be capital, and we are going to add unrecorded purchases. I'm just going to write P over here. Unrecorded purchases. So what is the value of unrecorded purchases over here? It's 4,000. And what is the value of purchases? 30,000. Okay, we are just going to add this to here is equal to 50. Okay, here obviously we are going to write it in. We are going to add in creditors. Again add. Okay. What is the value of creditors? 21,000. Outer column A, we are just going to add this to. Okay, done. Now provide interest on partner's capital account. Okay, so it is in to interest. इंटरेस्ट. सो इसको भी हम डिवाइड करेंगे किसमें? संजय एंड सुधीर. ओके, राइट देयर कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. तो क्या अमाउंट है कैपिटल का? 40,000 और 30,000. ओके, सो दिस इज द अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल. नाउ हमने इनका कैपिटल यहाँ पे लिख दिया. नाउ विल सॉल्व द एडजस्टमेंट. तो अभी यहाँ पे हम लिख देंगे दूसरा इफेक्ट यहाँ पे. तो इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर्स कौन है? संजय सुधीर. ओके, सो हम यहाँ पे इंटरेस्ट लिख देंगे. कितना परसेंट मिला है? 5% इंटरेस्ट है. ओके, सो बाय इंटरेस्ट. सो 40% का 5% कितना होता है? 40,000 का इंटू 5% इज 2,000. सो इसका इंटरेस्ट है 2,000 और सुधीर का इंटरेस्ट है सेम. विल कैलकुलेट हियर 30,000 इंटू 5% is equal to 1,500. Okay, अभी
Now we have completed each and every adjustment from here. We'll just write this interest 2000 को कॉपी करके यहाँ पे लिख दूँ, 2000 हुआ, इसको कॉपी करके यहाँ पे लिख देंगे और इन दोनों का टोटल हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, सो ये टोटल इंटरेस्ट है हमारा, ये दोनों हो गया। अब आते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखना है। सो जस्ट फॉलोइंग द फॉर्मेट ऑफ दिस अकाउंट एंड ट्रायल बैलेंस से हम देख के लिखेंगे। सबसे पहली चीज़ है ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है 20,000, लिख दी। फिर परचेसेस हमने ऑलरेडी कर दिया है, डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट था, डन। वेजेस, सैलरीज, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। फर्नीचर बाकी है तो फर्नीचर आता है एसेट्स में, तो हम यहाँ पे लिख देते फर्नीचर। क्या अमाउंट है फर्नीचर का, 16,000, तो लिख दो फटाफट। फिर आता है एडवर्टाइजमेंट, ऑफ कोर्स एडवर्टाइजमेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो हम यहाँ पे पहले सॉल्व करते हैं एडवर्टाइजमेंट्स। ओके, सो एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर सबसे पहला जो कि हमारे पास है ये है 2 इयर्स का, ऑलरेडी दिया है, तो हम इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं माइनस प्रीपेड। सो 2 इयर्स का 6,000 रुपीज़ है, तो बाकी प्रीपेड है 3,000 रुपीज़। आउटर कॉलम में ऑफ कोर्स 3,000 आएगा, 6,000 माइनस 3,000 विल बी 3,000। सिंस इट इज प्रीपेड इट इज एन एसेट, सो वैल्यू लिखेंगे प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट की। क्या वैल्यू है प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट की, वैल्यू 3,000, तो 3,000 को लिख दिया हमने यहाँ पे, डन। तो अभी हमने ये सब लिख दिया है। अब क्या आता है एडवर्टाइजमेंट का, बिल्स रिसीवेबल एसेट है अगेन। बिल्स रिसीवेबल को हम B/R भी लिखते हैं, सो हम B/R लिखेंगे। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बिल्स रिसीवेबल, 8,000, हमने 8,000 लिख दिया। नेक्स्ट व्हाट इज इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, कितना अमाउंट है इंश्योरेंस का, 2,000, डन, लिख दिया। हाँ, ड्राइंग्स आएगा कैपिटल अकाउंट में, सो 2 ड्राइंग्स। संजय के कितने ड्राइंग्स है, 2,000, लिख दिया। इसके 3,000 लिख दिया। एवरीवन शुड डू दिस वेरी क्विकली, ये बहुत फटाफट हो जाता है, इसलिए फिर हम लोग पहले एडजस्टमेंट सॉल्व कर लेते हैं। कैश इन हैंड कितना है, कैश इन हैंड 5,500। रेंट है नेक्स्ट, और हमने पहले मार्क करके रखा है तो हमको पता है कि कौन सा कहाँ आने वाला है, सो इट्स बिकम्स वेरी इजी, डन। रेंट हो गया। पावर एंड फ्यूल इधर आएगा, पावर एंड फ्यूल क्या अमाउंट है, पावर एंड फ्यूल का 3,000। सिंस वी हैव कंप्लीटेड द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, विल फर्दर मूव ऑन टू क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में हमने कैपिटल ऑलरेडी लिखा है, सेल्स बाकी है तो हम सेल्स लिखते हैं। सेल्स का क्या अमाउंट है, 70,000, डन। सन्ड्री क्रेडिटर्स वी हैव रिटर्न। बिल्स पेबल यहाँ पे इसको भी शॉर्ट फॉर्म में B/P लिखेंगे। व्हाट हैपेंड, बिल्स पेबल क्या अमाउंट है बिल्स पेबल का, 20,000, फटाफट से लिख देंगे 20,000। डिस्काउंट यहाँ पे है तो लिख देते हैं बाय डिस्काउंट। कितना परसेंट नहीं, कितना है, 5,000 है। आउटस्टैंडिंग रेंट यहाँ पे लिख देंगे। हम इस आउटस्टैंडिंग रेंट को यहाँ पे भी लिख सकते हैं, बट सिंस वी हैव ऑलरेडी डन द टोटल, सो विल राइट हियर लाइक OS rent. What is the amount of outstanding rent, 1,500, done. So we have just done. Now let's find out what's the total. So calculating total, that is first this is 70,000 plus 35,000. Okay, so we have total of 1,05,000 की टोटल यहाँ पे है। इसकी टोटल क्या है, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द टोटल ऑफ दिस साइड। दिस साइड की टोटल होगी शायद कम, 20,000 प्लस 7,000, सॉरी 7,000 प्लस 34,000 प्लस 3,000, 64,000 हुई, जो कि ये कम है इससे। सो वी नो 64,000 इज लेस देन 1,500, सो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1,05,000। सो 1,05,000 हमने लिख दिया, तो यहाँ पे कुछ तो बैलेंस है जो बचा है, तो वो हम कैसे लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, कैरी डाउन, बैलेंसिंग फिगर का। अब हम यहाँ पे इसका कितना आया था हमारा 64,000, 64,000 को हम 1,05,00 से 64,000 माइनस करेंगे तो हमें 41,000 इसका ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, जो कि हमारा करेक्ट है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ग्रॉस प्रॉफिट यही है जो हमें आंसर में दिखाया गया है टेक्स्ट बुक में, तो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो बिल्कुल करेक्ट है। नाउ ये कैलकुलेट, अभी ग्रॉस प्रॉफिट को हम लेके जाते हैं
यहाँ पे क्योंकि वो ट्रांसफर होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, क्योंकि हम उसको नीचे लेकर आ रहे हैं, ब्रॉट डाउन। ओके, हो गया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो इसका टोटल कितना है, इसका टोटल करेंगे दिस प्लस दिस, मिल गया हम लोगों को टोटल 46,000 है। इसका टोटल कितना है, लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द टोटल, यहाँ पे करके रख देते हैं फिलहाल, इज इक्वल टू दिस प्लस 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 प्लस दिस। सो टोटल 36,000 है, जो कि 46,000 से कम है। सो ऑब्वियसली दिस विल बी दिस साइड, जो कि डेबिट साइड है उसका बैलेंस हो रहा है, टैली नहीं हो रहा है तो बैलेंस बचा है, तो हम टोटल तो लिख दे 46,000। सिंस अब हम क्या करेंगे, जितना भी बचा है उसको सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो हम क्या करेंगे, इनके जो पार्टनर्स कैपिटल है उसमें ट्रांसफर करेंगे एज ए टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन, और इसको डिवाइड, मतलब इनको डिवाइड करेंगे 3:2 जो उनका रेशो दिया था उसमें, और टोटल अमाउंट कितना होगा 46,000 माइनस इज इक्वल टू दिस अमाउंट माइनस 36,000, ये होगा। तो 10,000 हमारा है, अभी 10,000 को डिवाइड करना है किसमें, संजय और सुधीर में। अभी संजय के कितना होगा 10,000 का, लेट्स सी, 10,000 को हम संजय इसमें डिवाइड करेंगे, तो 10,000 होगा कैसे, संजय का 10,000 इंटू 3, 30,000 हो गया, डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 2 + 3 = 5, सो उसको 6,000 मिलेगा। तो संजय का कितना है 6,000। सो अल्टीमेटली सुधीर का कितना हुआ 4,000 इंटरेस्ट। अभी हम इसको, इंटरेस्ट नहीं प्रॉफिट, तो अब हम इस प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जो कि क्रेडिट साइड ट्रांसफर होगा। तो हम लिखेंगे बाय, कॉपी करेंगे इसको, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे हम, लेकिन यहाँ पे 2 की जगह होगा बाय, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन की जगह ब्रॉट डाउन, और वो रेशो हमने लिखा है कि किस रेशो में उसको डिवाइड किया है। तो 6,000 यहाँ पे हो गया, फिर 4,000 इसका हो गया, डन। ये हमारा हो गया अच्छे से। क्या ये 10,000 है नेट प्रॉफिट, यस इट्स गिवन इन द क्वेश्चन इट्स 10,000, तो यहाँ तक हम करेक्टली पहुंच गए, है ना। अब हम जाएंगे यहाँ पे, यहाँ का ऑब्वियसली हमें देख के पता चल रहा है कि ये वाला साइड मैक्सिमम है, तो कितना हुआ 40,000 प्लस 2,000 प्लस 6,000 कितना हुआ 48,000। सो 48,000 हम एंड में लिख देते हैं। इसका कितना हुआ 30,000 प्लस 4,000 इज 34,000, 34,000 प्लस 1,500 इज 35,500। अभी इन दोनों वैल्यू को कॉपी करेंगे, ऑब्वियसली बात है कि बहुत ही कम है, तो हमें इनका बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा टू बैलेंस कैरीड डाउन करके लिखेंगे। तो ये जो बैलेंस कैरीड डाउन आएगा वो हम यहाँ पे उनके कैपिटल्स के रूप में लिखेंगे। सो व्हाट इज द बैलेंस, 48,000 माइनस 2,000 इज 46,000, एंड व्हाट अबाउट 35,000 माइनस 35,500 माइनस 3,000 विल बी 32,500। ये इन दोनों के बैलेंस है। अभी हम इसको यहाँ पे लिख देंगे, संजय के सामने संजय का बैलेंस जो कि संजय का कैपिटल है, सुधीर के सामने सुधीर का कैपिटल लिख देंगे, और इन दोनों के आउटर कॉलम में इनका टोटल कर देंगे। ओके, सो हमारा टोटल कैपिटल हमने सब कर दिया है। अभी अगर हमारी बैलेंस शीट टैली हो जाती है तो अगर आंसर इज करेक्ट, अगर नहीं होती है तो मे बी अपना आंसर में कुछ गड़बड़ हुई होगी, और गड़बड़ किससे नहीं होती, एवरीवन हैज अ राइट टू डू गड़बड़, राइट। सो लेट्स सी इफ आवर बैलेंस शीट इज गोइंग टू टैली। हमने अभी तक वर्किंग नोट रफली किया था, तो मैं वर्किंग नोट का फोटो लगा दूंगी ताकि आप समझ जाओगे कि वर्किंग नोट हमने किस टाइप से करना है और किस टाइप से शो करना है। हमने ओरली वर्किंग नोट किया है, तो हम यहाँ पे फोटो लगा देंगे, वो आप देख लीजिएगा। अभी आती है वर्किंग नोट, तो चलो हम बाद में लगा देंगे। अब लेट्स सी व्हाट्स द मैटर हियर, लेट्स सी इफ इज इक्वल टू दिस अमाउंट प्लस 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 दिस अमाउंट, कितना हुआ? So it's 1,28,000 over here. If here it comes 1,28,000, our answer is right. But if it shows something different, then we might have done something wrong. So let's calculate this. Is equal to, again I'm just adding this. I'm again and again saying I'm using Excel sheet, so it's easy for me to calculate. But if you are just using notebook, calculate it yourself in rough paper, or else use calculator if you are allowed to use calculator in examination. If not, just practice it yourself. So we got both the answers correct, so we should be very happy for this. And yes, we have completed the question. I'll be uploading this video soon, so bye, meet you soon with this question number 3. We have more 8 to 8 questions to be done, so let's see. This is what the working note is. So we have done the working note properly, whatever is to be done. So we have properly done the working note, and I have posted the image over here, so you can just write this way what working note is to be done. We can also write the depreciation of working note. We can also write adding outstanding expenses wala working note, and also we can write the bad debts wala working note. But these are the two main working notes because इसमें हम दोनों को divide करना है.
है ना। तो ये सब हमारा बहुत इजीली है। ये वर्किंग नोट में फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि एडवर्टाइजमेंट है, जो हिडन एडवर्टाइजमेंट है, वो हमने एडजस्टमेंट दिया है, उन्होंने हिडन एडजस्टमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट उन्होंने 2 ईयर्स के लिए पे कर दिया, इसी साल 2 साल के लिए पे कर दिया। तो हमें ये निकालना है कि 1 साल के लिए वो कितना पे कर रहे हैं। सो फॉर 2 ईयर्स दे पेड 6,000 दे पेड। तो 1 साल के लिए कितना, तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू डू क्रॉस मल्टीप्लाई और डायरेक्टली डिवाइड बाय 2, है ना। तो हमें 1 साल का अमाउंट पता चल जाएगा जो कि 3,000 है। तो अमाउंट जो हमने ऑलरेडी मतलब एक्स्ट्रा पे किया है तो वो है 3,000। सो वी गॉट द आंसर बाय दिस मेथड। So thank you, hope you like my video. Please like, share and subscribe to my channel. If you really like it, do comment down to me if you want anything to be done extra. Thank you.